Hello everyone, this is Neha this side, and I will be teaching you Game Theory Semester 5 with the Econ professor, and I have previously taught in Delhi University. This course will be absolutely precise, to the point, exam centric, and full with detailed explanation. If you want to follow up with the course, you can just check out the description. We will start with the game theory. So this is just a brief introduction to the game theory. तो game theory को as a subject और as a topic क्यों हमें पढ़ना है economics में, we just understand it with a simple example. Let's say दो competing firms है या कोई भी number of competing firms है. तो हमने अभी तक पढ़ा है कि हर एक फर्म अपने लिए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी दैट इज़ क्यू स्टार और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पी स्टार प्राइस लेवल चूज़ करता है ताकि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. But in real life situations, this firm is not taking decisions alone in the market. There are so many other firms जो कि अपने फर्म के लिए डिसीजंस लेगी, लेकिन उनके फर्म्स के डिसीजंस मेरे आउटकम को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अनदर कंपीटिंग फर्म, जो बाकी दूसरी कंपीटिंग फर्म्स है, अगर वो अपने प्राइसेस को लोअर कर देती है एंड कीपिंग इन माइंड कि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है, तो मेरे प्रोडक्ट्स की सेल फॉल होके दूसरी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो जाएगी एंड सो ऑन. मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे एंड नेक्स्ट फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो माई आउटकम दैट इज़ माई सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट that is not only affected by my decision of P star and Q star, but also by what other firms in the market choose to do. So इस scenario में मैं as a firm, what is my next best decision in response to the situation. So basically this through this example, this illustrates that the outcomes in the market are not influenced by just a single action. It is determined by the multiple actions. So game theory हमें क्या बताता है कि when there are multiple players in the market और हर एक player individual decision बनाएगा, लेकिन जो individual decision का outcome है that will not depend only on their decision but also on the choices that other players in the market are making. इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, लेट्स से टू स्टूडेंट्स शेयर अ प्रोजेक्ट एंड हाउ दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द लेवल ऑफ एफर्ट्स and the level of results, like the outcomes or the reward they are getting from it. So how they will share it among themselves, efforts and the outcomes both, is again a topic that we study in game theory. So in game theory हम देखते हैं कि जब market players आपस में interact करके simultaneously actions लेते हैं, how is a stable equilibrium achieved. So let us just get to the point कि हम ऐसे सिचुएशन में, इस सिनेरियोज में किस तरीके से वी फाइंड आउट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मार्केट इन दिस न्यू फ्रेमवर्क वेयर द आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरीबडीज एक्शंस कलेक्टिवली, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन सिनेरियोज में, वी हैव अ सिचुएशन और दैट वी कॉल द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिचुएशन or the problem is modeled into a strategic game. So that is modeled into a strategic game. Into a strategic game. Now the strategic game has interacting players, decision makers. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में there were two firms, तो दोनों की दोनों firms decision maker थी. वो decide कर रही थी either to increase the price, remain at the same price, lower the prices, right? So this strategic game has the second component, that is it has interacting decision makers. So it has interacting decision makers. And these decision makers are called players. गेम थ्योरी में हम उनको प्लेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे. एंड दीज डिसीजन मेकर्स, ईच डिसीजन मेकर, हर एक जो भी डिसीजन मेकर होगा, ईच प्लेयर, उसके पास एक सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस होंगे जिस पॉसिबल एक्शन से वो अपने आउटकम को
अफेक्ट कर सकता है, बट कीपिंग इन माइंड कि जो आउटकम अचीव होगा वो उसके चॉइसेस पे बेस्ड नहीं निकलेगा, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द actions taken by the other players in the market. So each player has a set of possible actions. Each player has a set of possible actions. अब उसके पास जितने भी पॉसिबल एक्शंस है उनमें से ही विल हैव अ ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस फॉर ईच एंड एवरी एक्शन. उसके पास हर एक प्रेफरेंस के लिए, सॉरी, हर एक एक्शन के लिए देयर विल बी एन ऑर्डरिंग कि उसे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन क्या लग रहा है, सेकंड प्रेफरेबल एक्शन एंड द थर्ड प्रेफरेबल एक्शन corresponding to the other players in the market के decisions के लिए. So each player will have preferences over the set of all the action profile. For example, in our scenario, maybe the firm prefers to lower the price is the first preference, then to remain at the same price is the second preference, and to increase the price level as its third preference. So it will have a preference ordering for all the action profiles. And in preferences को हम गेम थ्योरी में लिखेंगे एज पे ऑफ्स. जैसे कि कंज्यूमर थ्योरी में हम प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ यूटिलिटी फंक्शन. इन द गेम थ्योरी वी विल identify these preferences by the payoffs that each decision maker receives. So if I have to conclude, we can say that there is a strategic model जो कि हम अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्ट्रैटेजिक मॉडल. एंड नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस विल बी कि हमें स्ट्रैटेजिक मॉडल के सबसे पहले तो हमें प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सबसे पहले हमें प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं अपने स्ट्रैटेजिक मॉडल के. सेकंड, हमें सेट ऑफ एक्शंस रखने हैं, सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड एट लास्ट we have to identify the payoffs for each set of action. So let us start with a very basic example that is introductory, that is prisoner's dilemma. So prisoner's dilemma में there are two suspects in a major crime held in a two suspects in a major crime are held in a separate cells. So started by writing कि सबसे पहले you have players, right? तो आपके पास players कौन कौन से हैं? You have two suspects. ठीक है, you have two suspects. Now the question proceeds as there is enough evidence to convict each of them in a minor offense, but not enough evidence to convict either of them for a major crime unless one of them act as an informer against the other, that means he thinks. If they both stay quiet, each will be convicted in a minor offense. तो यहाँ से इतने पार्ट से हमें पता लगता है that they are set of actions. So let me write it as set of actions. हर एक सस्पेक्ट के पास what is their set of action? He can either think, that means या तो वो गवाही दे दे. So he can either think, गवाही दे दे सेकेंड सस्पेक्ट के अगेंस्ट. दूसरा ऑप्शन है either he can remain quiet. ठीक है, आई विल रिप्रेजेंट इट बाय F and Q.
Now the question proceeds as that if both of them stays quiet, they both will be convicted in a minor offense. They both will be convicted in a minor offense and spend 1 year of prison. If one and only one of them fake, अगर सिर्फ एक गवाही दे दे तो गवाह देने वाला तो फ्री हो जाएगा, she will be freed and used as a witness against the other who will spend 4 years in prison. लेकिन जिसके अगेंस्ट वो गवाही देगा वो सस्पेक्ट 4 साल की सज़ा लेगा. सो इफ़ एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ दैट इफ़ द बोथ थिंक्स, अगर उन दोनों ने गवाही दे दी तो दोनों के दोनों प्लेयर्स और दोनों के दोनों सस्पेक्ट्स विल स्पेंड 3 years in prison. So this leads us to a third part, that is their payoffs or the preference. तो पहले मैं preferences बनाती हूँ, फिर उसके बाद payoffs पे आते हैं. So their preferences. ठीक है, तो preferences में it is very much clear कि सबसे पहले तो वो prefer करेंगे to free. ठीक है, तो वो free होना तो prefer ही करेंगे. So the each player will prefer to free. Second is कि अगर चलो free नहीं हो रहे तो 1 साल की सज़ा मिल जाए. So the second option is 1 year prison. ठीक है, and then the third preference is 3 years prison. And fourth preference है सबसे least preferred is 4 साल की सज़ा. अब हम क्या करेंगे कि हर इस ऑर्डर प्रेफरेंस के एक्शंस को देखेंगे कि ये आउटकम किस एक्शन प्लान में आ रहा है. तो लेट्स से दीज आर प्रेफरेंसेस फॉर प्लेयर 1. तो ही विल बी फ्री व्हेन ही थिंक्स एंड द अदर प्लेयर रिमेन क्वाइट. अगर उसने गवाही दे दी अगेंस्ट द सस्पेक्ट 2 तो वो फ्री हो जाएगा, लेकिन सेकेंड सस्पेक्ट को 4 साल की सज़ा हो जाएगी. दिस इज़ द फर्स्ट प्रेफर्ड आउटकम. सेकेंड इज़ कि उसे 1 साल की सज़ा मिले. सो दैट विल हैपन ओनली व्हेन दिस विल हैपन व्हेन where it is written, okay, so it is if they both stay quiet, so they will have they have to spend 1 year in prison. So the second preferred outcome is the player 1 remains quiet given that player 2 has remained quiet. तो अगर player 2 quiet है, so the second preferred outcome for him is to remain quiet. third preferred outcome is 3 साल की सज़ा and 3 years of prison will get when he thinks, लेकिन उसके साथ वाले सस्पेक्ट ने भी गवाही दे दी. and the fourth preferred outcome is that he gets a 4 year prison. वो कब होगा? when he remains quiet लेकिन उसके साथ वाले सस्पेक्ट ने गवाही दे दी. that is quiet and think. so this जो भी हम फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं दैट इज़ फॉर प्लेयर वन, और जो हम सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं दैट इज़ फॉर प्लेयर 2. सो दीज वर द प्रेफरेंसेस फॉर द प्लेयर 1. तो अब हम इन्हीं प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए पे ऑफ्स असाइन करते हैं. सो असाइनिंग पे ऑफ्स. द पे ऑफ्स आर लेट्स से 3, 2, 1 एंड 0. ये पे ऑफ्स है फॉर प्लेयर 1. ठीक है, सिमिलर विल बी प्रेफरेंसेस एंड पे ऑफ्स फॉर प्लेयर 2. तो हमने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को एक स्ट्रैटेजिक मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है. एंड उसके लिए सबसे पहले वी हैव आइडेंटिफाइड द प्लेयर्स करेक्टली कि 2 सस्पेक्ट्स है. ईच सस्पेक्ट हैज़ 2 सेट ऑफ एक्शंस, आइदर टू थिंक और टू रिमेन क्वाइट. या तो वो गवाही दे दे या शांत रहें. थर्ड थिंग दैट वी नो इज़ प्रेफरेंसेस. सो वी हैव पुट देयर प्रेफरेंसेस इन द ऑर्डर. सबसे पहले वो प्रेफर करेगा टू रिमेन फ्री, then 1 year of prison, then 3 year of prison, and then 4 year of prison.
हर एक प्रेफरेंस के लिए वी हैव असाइन द पे ऑफ वैल्यूज दैट इज 3, 2, 1 एंड 0 एंड दिस इज फॉर प्लेयर 1. प्लेयर 2 के लिए भी ये गेम सिमेट्रिक है इन द सेंस क्योंकि प्लेयर 2 भी सिमिलर माइंड से ही सोच रहा है. ही ऑल्सो प्रेफर्स फ्री ओवर 1 ईयर ऑफ प्रिजन एंड लीस्ट प्रेफर्ड उसके लिए भी 4 ईयर ऑफ प्रिजन है, तो उसका पे ऑफ भी सिमेट्रिक ही रहेगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इनकी पे ऑफ्स को एक मैट्रिक्स टाइप में बना लेते हैं बॉक्स में. लेट्स से दिस इज़ फॉर प्लेयर 1, ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर प्लेयर 1 के लिए दो ऑप्शंस हैं, दैट इज़ टू रिमेन क्वाइट एंड टू थिंक. सिमिलरली प्लेयर 2 के पास भी दो ऑप्शंस हैं, दैट इज़ टू रिमेन क्वाइट एंड थिंक. ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा बॉक्स ओके. सो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट मूव इट. तो हम पे ऑफ्स की वैल्यूज़ डालने लग जाएंगे अब. सो पे ऑफ when player 2 remain quiet and player 1 also remains quiet, so his payoff for quiet is 2. so यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2. payoff for player 1 when he thinks but player 2 remains quiet, that is this option. तो इसके लिए payoff हमने असाइन किया था 3. then when player 1 remains quiet but player 2 thinks, इसके लिए पे ऑफ हमने असाइन किया था फॉर प्लेयर 1 एज 0. देन व्हेन प्लेयर 1 थिंक्स एंड प्लेयर 2 रिमेन्स ऑल्सो, सॉरी प्लेयर 2 ऑल्सो थिंक्स, तो यहाँ पे ऑफ फॉर प्लेयर 1 विल बी 1. अभी गेम सिमेट्रिक है तो प्लेयर 2 के लिए भी द पे ऑफ हेयर विल बी 2. जब प्लेयर 2 ने थिंक किया है लेकिन 1 क्वाइट रहा है तो यहाँ पे ऑफ है 3 क्योंकि यहाँ पे प्लेयर 2 फ्री होने वाला है. सो दिस इज हिज मोस्ट प्रेफर्ड आउटकम. देन दिस व्हेन द प्लेयर 2 रिमेन्स क्वाइट एंड प्लेयर 1 थिंक्स, इसमें अब प्लेयर 2 जो है उसको सज़ा हो जाएगी 4 साल की. सो दिस इज हिज लीस्ट प्रेफर्ड आउटकम एंड दैट्स वाई द पे ऑफ हेयर फॉर प्लेयर 2 इज 0. एंड द फोर्थ ऑप्शन वेयर बोथ प्लेयर थिंक्स the payoff for player 2 is 1. So you just need to remember कि जो first element है that is the payoff of player 1, that is the payoff for player 1, और जो second element है after the comma that is the payoff for player 2. So this is how you make a payoff matrix or a box for the strategic game. अब हम क्या करेंगे, हमें अब इसका Nash इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है, दैट इज़ टू फाइंड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन दिस गेम सिनेरियो. सो टू फाइंड आउट द Nash इक्विलिब्रियम पहले तो यू नीड टू बी क्लियर इन माइंड दैट द पे ऑफ्स जो भी हमने पे ऑफ्स असाइन करी है 2, 1, 0 और 3, दे आर असाइंड बाय द ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस. उनकी प्रेफरेंसेस को ऑर्डर में रख के वो पे ऑफ्स वैल्यू असाइन हुई है. सेकेंड थिंग इन दिस गेम सेटअप इज़ दैट टाइम इज़ एब्सेंट. Time is absent, that means this is a simultaneous move game. So I write it as simultaneous move game. This is a simultaneous move game. Simultaneously move game. That means इस गेम में नो प्लेयर नोज द एक्शन जो बाकी प्लेयर ले रहे हैं. अगर प्लेयर 1 थिंक कर जाता है, प्लेयर 2 डज नॉट नो कि प्लेयर 1 ने थिंक किया है बिकॉज द एक्शन आर टेकन एट द सेम टाइम. ठीक है, सो दिस इज दैट नो, दिस इज अ साइमल्टेनियसली मूव गेम. दैट मीन्स नो प्लेयर knows other players chosen action.
ना बिकॉज ये साइमल्टेनियसली मूव गेम है, प्लेयर 1 को नहीं पता कि प्लेयर 2 क्या ऑप्शन चूज़ करने वाला है, एंड प्लेयर 2 को भी नहीं पता कि प्लेयर 1 विल रिमेन क्वाइट और विल ही थिंक। तो इस गेम सेटअप में होता क्या है साइमल्टेनियसली मूव गेम में, हर एक प्लेयर विल थिंक ऑफ ईच पॉसिबल एक्शन जो कि नेक्स्ट प्लेयर कर सकता है, और हर पॉसिबल एक्शन के लिए वो अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी सोचेगा। ठीक है, सो वी आर टेकिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 1 राइट नाउ। सो लेट्स से प्लेयर 1 वाइल जब उसको अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजीज चूज़ करनी है तो वो पहले सोचता है कि ठीक है, अगर प्लेयर 2 चूज़ टू रिमेन क्वाइट, तो अगर प्लेयर 2 क्वाइट है और मैं भी क्वाइट ही रहूँगा, तो आई विल गेट अ पे ऑफ ऑफ 2, बट इफ़ आई थिंक आई विल गेट अ पे ऑफ ऑफ 3। नाउ बिकॉज 3 इज़ ग्रेटर देन 2, उसकी पे ऑफ ज़्यादा है, तो ही विल चूज़ टू थिंक, उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू थिंक। सो वी विल जस्ट हाईलाइट दिस। अब वो सोचता है लेकिन अगर प्लेयर 2 थिंक कर गया तो, सो इफ़ यू थिंक एंड ही रिमेन्स क्वाइट, अगर प्लेयर 2 ने गवाही दे दी और मैंने गवाही नहीं दी, तो आई गेट अ पे ऑफ ऑफ 0। बट इफ़ प्लेयर 2 थिंक्स और मैंने भी थिंक कर दिया, तो आई गेट अ पे ऑफ 1 विच इज़ अगेन हायर देन 0, सो आई विल चूज़ टू थिंक। सो दैट मीन्स फॉर प्लेयर 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि प्लेयर 2 क्वाइट रहे या थिंक रहे, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 1 इज़ टू थिंक, कि वो गवाही दे दे। सो दिस इज हिज बेस्ट स्ट्रैटेजी। वी विल डू फॉर प्लेयर 2। तो प्लेयर 2 भी सिमिलर तरीके से ही सारी स्ट्रैटेजीज बनाएगा। सो let's say he thinks that the player 1 is going to play the strategy to remain quiet, तो player 2 अपनी पे ऑफ्स दिखेगा, तो player 2 की पे ऑफ्स इज द सेकेंड एलिमेंट इन ईच बॉक्स। तो अगर player 1 क्वाइट प्ले कर रहा है, तो player 2 अगर क्वाइट प्ले करता है ही गेट्स अ पे ऑफ ऑफ 2, बट अगर वो फिंक कर देता है, दैट इज वो गवाही दे देता है, ही गेट्स अ पे ऑफ ऑफ 3 दैट इज हायर देन 2, सो ऑब्वियसली ही विल चूज द स्ट्रैटेजी टू फिंक। नाउ लेट्स से इफ द प्लेयर 1, ये प्लेयर 2 सोच रहा है, प्लेयर 1 अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हुए, दैट लेट्स से अगर प्लेयर 1 फिंक कर देता है तो मुझे क्या करना है। तो अगर प्लेयर 1 फिंक कर रहा है, प्लेयर 2 ने अगर गवाही नहीं दी, ही गेट्स अ पे ऑफ 0, लेकिन अगर वो गवाही दे देता है, ही गेट्स एन पे ऑफ 1 एंड दैट इज हायर देन 0, सो ऑब्वियसली प्लेयर 2 विल मैक्सिमाइज और विल चूज एन ऑप्शन दैट गिव्स हिम हायर पे ऑफ। तो प्लेयर 2 विल थिंक when he thinks that the player 1 will think। तो इस तरीके से irrespective that player 1 remains quiet or think, player 2 का बेस्ट स्ट्रैटेजी है to think। So by doing this we can see कि player 1 is going to play the strategy think and player 2 is going to play strategy think। So your Nash equilibrium becomes, so your Nash equilibrium is Nash equilibrium is this action plan think think। Now important thing to note here is that Nash equilibrium हमेशा action strategies में रहता है। 1,1 is not your Nash equilibrium, that is the payoff that individual receives after the Nash equilibrium is achieved। Nash equilibrium is always the action profile equilibrium, so we can define Nash equilibrium as it is the action profile this is the action profile, let's say I'm generalizing it to A star, so it is an action profile A star if each player I, let's say each player I receives a utility that we have mentioned it here as payoffs. He receives an utility from the action profile A star that is greater than or equals to the utility the player I would have received by playing any other strategy AI different from A star, given that player 2 chooses his best strategy AI star negative. Okay, so we have generalized the definition for Nash equilibrium. So one thing important to notice that the Nash equilibrium is always in terms of the action profile. If you write 1,1 as your Nash equilibrium, it will be completely wrong because that is a payoff that the individual is receiving, not the Nash
इक्विलिब्रियम। अब अभी हमने नैश इक्विलिब्रियम जो फाइंड आउट किया है दैट इज़ फिंक फिंक, हमने वो फाइंड आउट किया है यूजिंग पे ऑफ्स। वी कैन ऑल्सो लुक एट द सेम इक्विलिब्रियम फ्रॉम the point of view that there is no incentive to deviate. Okay, so from the point of view that there is no incentive to deviate. Okay, so let us choose the first strategy, that is q comma q. So this can't be a Nash equilibrium because अगर player 1 को पता है that player 2 is going to choose quiet, he has an incentive to deviate, incentive to he has an incentive to deviate by finking. Why? Because he can maximize, he can increase his payoff by finking. So with the strategy q comma q, that is remain quiet and quiet, both players remain quiet, this can't be a Nash equilibrium because there is an incentive to deviate. Now if we look at the other strategy, that is let's say q comma f. Okay, so with this strategy as well, this can't be a Nash equilibrium because player 1 again has an incentive to deviate. अगर player 1 को पता है कि player 2 think करने वाला है, so player 1 is getting a payoff of 0 by remaining quiet. So he has an incentive to deviate कि मैं भी गवाह दे देता हूँ, so that at least I do not get 4 साल की सज़ा, मेरे को 3 साल की सज़ा हो जाएगी. That's why he get a payoff of 1. So he has an incentive to deviate, so this can't be a Nash equilibrium. Next is strategy f comma q. Now this again can't be a Nash equilibrium because here the player 2, the suspect 2 has an incentive to deviate. उसे पता है कि player 1 think करने वाला है, तो मुझे अगर मैंने think नहीं किया I will get a prison of 4 year, लेकिन अगर मैं गवाह दे देता हूँ तो मैं 3 साल के लिए जेल जाऊँगा. So that is a better option for him. So he also chooses to think. So he again here player 2 has an incentive to deviate. Here player 2 has an incentive to deviate. Okay, this also cannot be your Nash equilibrium. Now the last strategy is f comma f, that is that both player think. Now here no individual has an incentive to deviate, so this can be a Nash equilibrium. अगर player 1 को पता है कि player 2 think करने वाला है, so if he deviates to remain quiet, his payoff is decreasing, and so he will not deviate from the strategy think. Similarly, the logic goes for player 2, and the think is the Nash equilibrium. From the logic of that, there is no incentive to deviate. So we can say that we can conclude that at Nash equilibrium, no player has an incentive to deviate. So that's all for today's video. In next class, we will cover a variant example for the prisoner's dilemma, and this is a variant example for prisoner's dilemma with altruistic preferences. यहाँ पे individual की preferences altruistic हो सकती है. So you can look at this question, and in the next class we will take up this question.